श्रीवैकुण्ठगद्यं यामुनार्यसुधाम्बोधिमवगाह्ययतामति आदाय भक्तियोगाख्यं रत्नं सन्दर्शयाम्यहं स्वाधीनत्रिविधचेतना चेतनस्वरूपस्थिति प्रवृत्तिभेदं क्लेशकर्माद्यशेषदोषा संस्पृष्टं स्वाभाविकानवधिकातिशय ज्ञानबलैश्चर्यवीर्यशक्तितेज प्रवृत्तसङ्गोय कल्याणगुणगणोद्य महार्णवं परमपुरुषं भगवन्तं नारायणं स्वात्मिवेन सुहृत्वेन गुरुत्वेन च परिगृह्य एकान्तिकात्यान्तिक तत्पादाम्बुजद्वय परिचर्यैकमनोरथः तत्प्राप्तये च तत्पादाम्बुजद्वय प्रपत्तेरन्यन्न मे कल्पकोटिसहस्रेणापि साधनमस्तीति मन्वानः तस्यैव भगवतो नारायणस्य अखिलसत्त्वदयैकसागरस्य अनालोचितगुणगुणाखण्ड जनानुकूला मर्यादशीलवतः स्वाभाविकानवधिकातिशयगुणवत्तया देवतिर्यङ्गनुष्यादिकिलजन हृदयानन्दनस्य आश्रितवत्सल्यकजलदेः भक्तजनसंश्लेषैकभोगस्य नित्यज्ञानक्रेश्चर्यादि भोगसामग्रीसमृद्धस्य महाविभूतेः श्रीमच्चरणारविन्दयुगलम् अनन्यात्मसञ्जीवनेन तद्गतसर्वभावेन शरणमनुव्रजेत् ततश्च प्रत्यहमात्मोज्जीवनयैव मनुस्मरेत् चतुर्दशभुवनात्मकम् अण्डं दशगुणितोत्तरं च आवरणसप्तकं समस्तं कार्यकारणमतीत्य वर्तमाने परमव्योपशब्दाभिधेये ब्रह्मादीनां वाग्मनसागोचरे श्रीमतिवैकुण्ठे दिव्यलोके सनकविधिशिवादिभिरपि अचिन्त्यस्वभावैश्चर्यै नित्यसिद्धैरनन्तैर्भगवतानुकूल्यैकभोगैर्दिव्यपुरुषैः महात्मभिः आपूरिते तेषामपि यत् परिमाणं यदैश्वर्यं ईदृशस्वभावमिति परिचेत्तु योग्ये दिव्यावरणशतसहस्रावृते दिव्यकल्पकतरूपशोभिते दिव्योद्यानशतसहस्रकोटिभिरावृते अतिप्रमाणे दिव्यायतने कस्मिंश्चिद्विचित्र दिव्यरत्नमय दिव्यास्थानमण्डपे दिव्यरत्नस्तंभ शतसहस्रकोटिभिरूपशोभिते दिव्यनानारत्नकृतस्थलविचित्रिते दिव्यालङ्कारलाङ्कृते परितः पतितैः पतमानैः पादपस्तैश्च नानागन्धवर्णैः दिव्यपुष्पैः शोभमानैर्दिव्यपुष्पोपवनैरूपशोभिते सङ्कीर्णपारिजातादि कल्पद्रुमोपशोभितैः असिङ्कर्णैश्च केश्चिदन्तस्तपुष्परत्नादिनिर्मित दिव्यलीलामण्डप शतसहस्रशोभितैः सर्वदानुभूयमानैरप्यपूर्ववदाश्चर्यमावद्भिः क्रीडाशैल शतसहस्रैरलङ्कृतैः कैश्चिन्नारायण दिव्यलीलासाधारणैः केचित् पद्मवनालया दिव्यलीलासाधारणैः साधारणैश्च कैश्चित् शुकसारिकामयूरकोकिलादिभिः कोमलकूजितैराकुलैः दिव्योद्यान शतसहस्रैरावृते मणिमुक्ताप्रवालकृतसोपानैः दिव्यामलमृतरसोदकैः दिव्याण्डजवरैः अतिरमणीयदर्शनैः अतिमनोहरमधुरस्वरैः आकुलैः अन्तस्थमुक्तामय दिव्यक्रीडास्थानोपशोभितैः दिव्यसौगन्धिकवापीशतसहस्रैः दिव्याराजहंसावली विराजितैरावृते निरस्तातिशयनानन्दैकरसतया चानन्याश्च प्रविष्टान् नुन्मादयब्धिः क्रीडोद्देशैर्विराजिते तत्र तत्र कृत दिव्यपुष्पपर्यङ्कोपशोभिते नानापुष्पासवास्वादमत्तभृङ्गावलीभिः उद्गीयमान दिव्यगान्धर्वेण पूरिते चन्दनागरुकर्पूर दिव्यपुष्पावगाहि मन्दानिलसेव्यमाने मध्ये पुष्पसञ्चये विचित्रिते महति दिव्यायोगपर्यङ्के अनन्तभोगिनी श्रीमद्वैकुण्ठैश्चार्यादि दिव्यलोकम् आत्मकान्त्या विश्वमाप्यायन्त्या शेषशेषानादि सर्वपरिजनं भगवतस्तत्तदवस्तोचितपरिचर्यायाम् आज्ञापयन्त्या शीलरूपगुण
विलासादिभिः आत्मानुरूपया श्रिया सहासीनं प्रत्यग्रोन्मीलित सरसिजसदृश नयनयुगलं स्वच्छ नीलजीमूतसङ्काशम् अत्युज्ज्वल पीतवाससं स्वया प्रभयातिर्निर्मलया अतिशीतलया अतिकोमलया स्वच्छमाणिक्याभया कृत्स्रं जगद्भासयन्तम् अचिन्त्या दिव्याद्भुत नित्ययौवन स्वभावलावण्यमयामृतसागरम् अतिसौकमुर्यादादि ईषत् प्रस्विन्न वदलाक्ष्यमान ललाटफलक दिव्यालकावली विराजितं प्रबुद्ध मुक्ताम्बुज चारुलोचनं सविभ्रूमभ्रूलतम् उज्ज्वलाधरं शुचिस्मितं कोमलगण्डम् उन्नसम् उदग्रपीनसं विलम्बिकुण्डलालकवाली बन्धुरकम्बुकन्धरं प्रियावतं सोत्पल कर्णभूषण श्लातकाबन्ध विमर्दशंसभिः चतुर्भिराजानुविलम्बिर्भुजैर्विराजितम् अतिकोमल दिव्यरेखालङ्कृता ताम्रकरतलं दिव्याङ्गुलीय कविराजितम् अतिकोमल दिव्य नकावली विराजितम् अतिरक्ताङ्गुलीभिरङ्कृतं तक्षोन्मीलित पुण्डरीक सदृश चरणयुगलम् अतिमनोहर किरीटमकुटचूडावतंसं मकरकुण्डल ग्रैवेयक हार केयूर कटक श्रीवत्स कौस्तुभ मुक्ता दामोदर बंधन पीतांबर कांचीगुण नूपुरादिभिरन्त्यन्त सुख स्पर्शैः दिव्यगन्धैर्भूषणैर्भूषितं श्रीमत्या वैजयन्त्या वनमालया विराजितं शङ्खचक्रगदासि शार्गादि दिव्यादयैः सेव्यमानं स्वसङ्कल्पमात्रावुक्लुप्त जगज्जन्मस्थिति द्वांसादिके श्रीमती विश्वसेने न्यस्तसमस्तामैश्वर्यं वैनतेयादिभिः स्वभावतो निरस्तसमस्त सांसारिकस्वभावैः भगवत्परिचर्याकरणयोग्यैर्भगवत्परिचर्यैकभोगैर्नित्यसिद्धैरनन्तैः यथा योगं सेव्यमानम् आत्मभोगेन अननुसंहितपराधिकाल दिव्यामल कोमलावलोकनेन विश्वमहादयन्तम् ईशदुन्मीलित मुकाम्बुजोदर रविनिर्गतेन दिव्याननारविन्दशोभाजनेन दिव्यागाम्भीर्यौदार्य सौन्दर्य माधुर्याद्यनवधिक गुणगणाविभूषितेन अतिमनोहर दिव्यभावगर्भेण दिव्यलीलालापोमृतेन अखिलजन हृदयान्तराण्या पूरयन्त भगवन्तं नारायणं ध्यानयोगेन दृष्ट्वा ततो भगवतो नित्यस्वाम्यमात्मनो नित्यदास्यं च यथावस्थितमनुसन्धाय कदाहं भगवन्तं नारायणं मम कुलनाथं मम कुलदैवतं मम कुलधनं मम भोग्यं मम मातरं मम पितरं मम सर्वं साक्षात्करवाणि चक्षुषा कदाहं भगवत्पादाम्बुजहृदं शिरसा संगृहीष्यामि कदाहं भगवत्पादाम्बुजहृदयपरिचर्याशया निरस्तसमस्तेतरभोगाशः अपगतसमस्तसंसारिकस्वभावः तत्पादाम्बुजद्वयं प्रवेक्ष्यामि कदाहं भगवत्पादाम्बुजद्वयपरिचर्याकरणयोग्यस्तदेकभोगस्तत्पादौ पादौ परिचरिष्यामि कदा मां भगवन् स्वकीयया अतिशीतलया दृशा अवलोक्य स्निग्धगम्भीरमधुरया गिरा परिचर्याया आज्ञापयिष्यति इति भगवत्परिचर्यायामाशं वर्धयिष्व तयैवाशया तत्प्रसादोपबृहितया भगवन्तमुपेत्य दूरादेव भगवन्तं शेषभोगे श्रिया सहासीनं वैनतेयादिभिः सेव्यमानं समस्तपरिवाराय श्रीमते नारायणाय नमः इति प्रणम्य उत्थाप्योत्थाय पुनः पुनः प्रणम्य अत्यन्त साध्वसविनयावनतो भूत्वा भगवत्परिषदगणनाय कैद्वारपालैः कृपया स्नेहगर्भया दृशाबललोकितः सम्यग्बन्धितैरस्तैर्वानुमतो भगवन्तमुपेत्य श्रीमता मूलमन्त्रेण मामैकान्तिकान्त्यान्तिक परिचार्यकरणाय परिगृह्णीव इति याचमानः प्रणयात्मनं भगवते निवेदयेत् ततो भगवता स्वयमेवात्मसञ्जीवनेन अमर्यादशीलवता अतिप्रेमात्वितेन अवलोकने
अवलोकनेनावलोक्य सर्वदेश सर्वकाल सर्वावस्तुचितान्यन्तशेषभावाय स्वीकृतोऽनुज्ञातश्च अत्यन्तसात्वसविनयावनतः किङ्कुवार्णः कृताञ्जलिपुटो भगवन्तमुपासीत। ततश्चानुभूयमानभावविशेषः निरतिशयप्रीत्यान्यत्किञ्चित् कर्तुं द्रष्टुं स्मर्तुमशक्तः पुनरपि शेषभावमेव याचमानो भगवन्तमेव विचिन्नस्तोतो रूपेणवलोकनेन अवलोकयन्नासीत। ततो भगवता स्वयमेवात्मसञ्जीवनेनावलोकनेनावलोक्य सस्मितमहूय समस्तक्लेशपाहं निरतिशयसुखावहमात्मीयं श्रीमत्पादारविन्दयुगलं शिरसि कृतं ध्यात्वा अमृतसागरान्तर्निर्मग्नसर्वावयवः सुखमासीत। लक्ष्मीपतेर्यतिपतेश्च दयैकदाम्नोः योऽसौ पुरा समजनिष्ठ जगद्वितार्थं प्राप्यं प्रकाशयतु नः परमं रहस्यं संवाद एष शरणागति मंत्रसार इति श्रीभगवद्रामानुजविरचिते श्रीवैकुण्ठगद्यम्।